well. अक्षय, आप YouTube पर भी हो? आज आपका सेशन सही, आपका नेटवर्क सही चल रहा है? चलो ठीक है। ओके, यू शिफ्ट ऑन टू यूट्यूब। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लेना। ओके, चलो। सो लेट्स बिगिन ओवर विद द सेशन। ठीक है, किसी ने कल के सेशन तक कुछ पूछना है, कुछ बताना है? आयुषी, यू हैव ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, and if you have joined for the first time, then I would request you to join with the website amcev.in. यहां पर नीचे एक फोन नंबर लिखा हुआ है, and here यहाँ पे एक फोन नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर व्हाट्सएप दे दो. आई विल बी एबल टू जॉइन यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट. ओके, सो लेट्स बिगिन ओवर विद इट. तो आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द चार्ज डेंसिटी. नाउ, charge density is an extremely important concept, really important concept. Okay, क्योंकि जब भी हम किसी आयन की बात करते हैं, whenever we talk about any of the ion, then the stability of the ion, the reactivity of the ion, the anything that the ion does, it actually depends on the charge density. If the two ions have the same charge density, then in that case their behavior also becomes same. तो चार्ज डेंसिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स. द फर्स्ट force is the strong nuclear force. Now, strong nuclear force is extremely small range force. Okay, and who is that angry grandpa? May I know who's angry grandpa? Okay, so whenever we talk about the charge density here, just remember the electrostatic force is the second strongest force in the universe. And that too, it is a long range force. जैसे gravitational force है, long range force है, उसी तरीके से electrostatic and magnetic force are also long range forces. Electrostatic force है, magnetic force है, फिर हमारे पास gravitational force है, and electrostatic force for between the two protons is near about 10 raised to power 38 times greater than the gravitational force between them. तो electrostatic force बहुत ज्यादा strong है. Now, because of this extremely strong electrostatic force, everything in the universe is either actually neutral or it tries to be neutral. तो यही रीजन समझ के चलना कि हमारे पास कहीं पर भी चार्ज स्टोर नहीं होता. क्लियर? सो चार्ज, इट एवरीथिंग वांट्स टू बी न्यूट्रल. तो वही बात यहां पर है, चार्ज डेंसिटी. जिसकी जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है. एंड जस्ट रिमेंबर, इतना तो आपने फिजिक्स में समझा ही होगा कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द चार्जेस आर ऑलवेज स्प्रेड ऑन द सरफेस. चार्जेस बल्क में नहीं होते, चार्जेस सरफेस पर होते हैं. तो इट इज ऑलवेज नॉट जस्ट द चार्ज डेंसिटी, इट इज ऑलवेज सरफेस चार्ज डेंसिटी. Okay, so just so we have the surface charge density. Clear? And when we talk about the surface charge density, just understand that more is the charge density, more is charge density, more unstable is the species. And please understand that it is magnitude of the charge. We are not bothered about it is negative charge or the positive charge. देखो, as far as universe is concerned, negative या positive charge दोनों का effect exactly same है. There is no difference in the effect of the positive or the negative charge. और charge actually होता क्या है, nobody knows. Clear? चार्ज क्यों होता है, क्या होता है, हमें नहीं पता.
Fine. So that is what we have as the thing called the charge density. And what is the effect of the charge density? ठीक है ना? Higher is the charge density of a species, more unstable it becomes. अब आप सोचोगे सर हम चार्ज डेंसिटी की बात क्यों कर रहे हैं, बताता हूं अभी. अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड नथिंग टू डू विद द साइन. मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड लेस. अच्छा, एक सिंपल सी बात. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नथिंग टू डू विद द साइन. एंड जितना छोटी स्पीशी होती चली जाएगी, लोअर इज द सरफेस एरिया, more is the charge, higher would be the charge density, more unstable would be the species. The stable species is with zero charge, मतलब कि neutral. ठीक है. चार्ज डेंसिटी में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी बात कर सकते हैं. A high charge density species can replace a low charge density species from its compound. जिसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा. वो लो चार्ज डेंसिटी को कंपाउंड को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर सकता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां हो जाते हैं. ये यानी कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो भी हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहे हैं, वी कैन एक्चुअली जस्टिफाई देम अकॉर्डिंग टू द चार्ज डेंसिटी. अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन. General term is solvation. That is, when the solvent surrounds a particular species, it is called solvation. ठीक है. And हाँ बेटा अनन्या, मुझे पता है इस समय वाईटी और स्पेशल्स दोनों में कहीं पर भी कोई भी लाइव क्लास नहीं है. स्टिल वी हैव ओनली 3 स्टूडेंट्स इन द गूगल मीट एंड 3 स्टूडेंट्स इन द वाईटी. बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, सो रहे हैं, मुझे नहीं पता. हो सकता है सो रहे हो. लेट अस सी क्या होता है. सो अ जनरल टर्म इज सॉल्वेशन. When the solvent is specifically water, it is termed as hydration. अब hydration solvation का मतलब क्या है? What exactly it means? Now, if any species is added to water, it will have some interaction with water molecules. अब एक बात का ध्यान रखना, water is able to interact with a species in 3 ways. 3 तरीके से interact करता है. ठीक है? Interaction of water. ठीक है. सबसे पहली बात, water is a dipole. So यहां पे डायपोल डायपोल हो सकता है. डायपोल आयन इंटरैक्शन हो सकता है. एंड डायपोल आयन इंटरैक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन. ठीक है. वाटर कैन इंटरैक्ट विद द आयन थ्रू द आयन डायपोल इंटरैक्शन. ठीक है. एंड इट कैन ऑल्सो इंटरैक्ट एज dipole induced dipole interaction. Now this interaction is very weak. So much so कि this ion induced dipole interaction is generally वो चीजें dissolve नहीं होती पानी के अंदर. They are insoluble in water. ठीक है. The substances which are interacting with dipole induced dipole interaction with water are not soluble in water. Clear? तो इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन अपने आप में वाटर के डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. और वाटर के अंदर हमारे पास इंटरनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो वाटर अगर किसी और से बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसको अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, जो कि वो नहीं चाहता. क्लियर? एक बात, बड़ी मजेदार सी बात समझना, जब हम पानी पर तेल डालते हैं, इफ वी पुट ऑयल ऑन वाटर, देन इन दैट केस ऐसा नहीं है दैट ऑयल डज नॉट इंटरैक्ट विद वाटर. ऑयल इंटरैक्ट्स विद वाटर. They are ऑयल पानी में. hydrophobic. हाँ अनन्या. They are hydrophobic. नहीं. इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर इज ऑयल फोबिक. ये एक पिक्यूलियर सी बात है. हम कहते हैं ना ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सच्चाई ये है, वाटर डज नॉट अलाउ ऑयल टू डिजॉल्व.
वाटर और ऑयल के इंटरैक्शन वाटर वाटर के इंटरैक्शन से वीक होते हैं, इसलिए वाटर ऑयल को अपने अंदर जगह नहीं देता। ठीक है। हमें लगता है ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा, हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि वाटर पानी ऑयल को डिसॉल्व होने नहीं दे रहा। तो until and unless the species which is being dissolved in water has a interaction greater than water water hydrogen bond interaction, तब तक वो स्पीशी पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। समझे? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पानी किसी को अपने में डिसॉल्व नहीं होने देता। एंड ऑफ कोर्स द सेकेंड थिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर इंटरैक्ट्स विद अ स्पीशी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हमने क्या स्पीशी पानी में डाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, पानी में अगर कोई स्पीशी डिसॉल्व हो रही है, और डिसोल्यूशन का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि द स्पीशी इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0.1 मोलर। ठीक है। सो कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.1 मोलर है, तब हम कहते हैं सॉल्युबल। Any species which is capable of forming 0.1 molar or greater solution in water, वो या तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या फिर वो पानी में डिसोशिएट करके आयंस बना रहा है। अगर कोई स्पीशी पानी में डिसोशिएट करके आयंस नहीं बना रहा और पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, बिना सोचे बोल दो, दिस इज नॉट soluble in water. It will not be able to make the concentration greater than 0.1 molar. खत्म। ठीक है। अब वो आप कहोगे नहीं ट्रेसेस में सॉल्युबल है। अब एक बात ध्यान रखना, मिट्टी के तेल की बोतल में अगर पानी डाल दो और पानी निकालो तो पानी के अंदर मिट्टी का तेल दिखाई नहीं देगा, लेकिन पानी में से मिट्टी के तेल की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? दैट इवन दैट इज सॉल्युबल इन वाटर टू सम एक्सटेंट। समझे? तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहां तक समझ में आ गया? सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, पानी का मतलब समझ में आ गया। नाउ व्हेन वाटर सराउंड्स अ स्पीशी। अच्छा हाँ, तीसरी बात तो मैंने आपको बताई नहीं। तीसरा, पानी किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है? बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। वाटर कैन इंटरैक्ट विद अ स्पीशी थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ व्हेन वाटर सराउंड्स अ स्पीशी, एनी स्पीशी, थ्रू आयन डायपोल इंटरैक्शन, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है। Okay. These interactions may lead to breaking of water-water bonds, the bonds between the constituent particles of the species, and the formation of bonds between water and the species which has been added. ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, मैंने अभी अभी बताया, these are strong intermolecular forces. For them to break, the bonds of the species and water must be strong enough. और वो कौन से हो सकते हैं? They can be ion dipole interaction, they can be hydrogen bond, or they can be coordinate bond. ठीक है। टू नहीं, three. And which are those? The species capable of forming hydrogen bonds with water. The species breaks apart in water to form ions. And third, coordinate bonds. Yes, sir. Clear? किसी को यहां तक कुछ पूछना है? Okay. If a species does not form hydrogen bond in water and it does not even dissociate to form the ions, does not have any significant solubility in water. ठीक है। If you consider oil on water, it is generally said that oil does not dissolve in water. The fact is, the oil drop spreads on the surface of water. इसका मतलब यह है कि oil is interacting with water. Oil tries to have the connection with water. Water उसको अंदर नहीं जाने देता.
ठीक है, it is water which does not allow oil to mix with it. ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनना. Any interaction in which water surrounds the species without itself breaking. मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल नहीं टूट रहा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शंस टूट रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल नहीं टूट रहा. ठीक है, अब वो कौन सा इंटरेक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए वाटर का टूटना जरूरी नहीं है. आयन डायपोल इंटरेक्शन, इसके लिए भी वाटर का टूटना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट टूटना ही नहीं है. एंड तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड is termed hydration. ठीक है, now the layer of water formed on surface of the species is termed hydration sphere. ठीक है, the layer of water formed on the surface of the species is termed hydration sphere. Any confusions here? समझे में आ गई? अब एक बात का ध्यान रखना, हाइड्रेशन स्फीयर कोई जरूरी नहीं है सिंगल लेयर्ड हो. हाइड्रेशन स्फीयर कैन बी मल्टीपल लेयर्ड. अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, यहां पर हमने इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर दिया. अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो ऑक्सीजन आएगा ना, बिकॉज ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज. तो दिस इज समथिंग लाइक वी कॉल एज आयन डायपोल इंटरेक्शन. ठीक है, फाइन. यहां पर ये कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? इट इज गोइंग टू सराउंड इट इन 3 डायमेंशंस. ये 2 डायमेंशन में फ्लैट नहीं होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, आगे पीछे सारे होंगे. 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्पीशी. यहां पर इट इज गोइंग टू इंटरैक्ट. अब इससे होगा ये कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जब उस स्पीशी की तरफ मूव करेगा तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू गेट अ डेल्टा पॉजिटिव, हायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. अब इसके ऊपर फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर जाएगा. And we are going to have not one but multiple hydration layers. Okay, now these hydration layers are going to be multi-layered हेलो and this is सर. going to become hydration sphere. हाँ बेटा तीर्थराज. सर अगर वो मतलब सारे हाइड्रोजन डेल प्लस हो जाएगा. नहीं, अब एक डेल प्लस है, फिर एक डेल्टा डेल्टा प्लस होगा, यानी कि एवरी लेयर इज गोइंग टू हैव अ रिड्यूसिंग चार्ज ऑन H प्लस. ओके, अच्छा. नहीं तो इनफाइनाइट लेयर बन जाएंगे ना. इनफाइनाइट लेयर नहीं बनते, फाइनाइट बनते हैं. ओ ओके सर. ओके, और मजेदार बात यह है कि जितनी चार्ज डेंसिटी स्पीशी की ज्यादा होगी उतने ज्यादा लेयर्स बनेंगे. जैसे लिथियम आयन की अगर हम बात करें तो लिथियम आयन के इफेक्टिव 27 लेयर्स होते हैं. इफेक्टिवली 27 लेयर्स होते हैं. जब लिथियम आयन मूव करता है तो उसके 27 लेयर्स ऑफ वाटर उसके साथ मूव करते हैं. ऑन द अदर हैंड सीजियम आयन हैज ओनली 8 लेयर. सीजियम आयन की चार्ज डेंसिटी कम है तो उसके ऊपर 8 लेयर मूव करते हैं. पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेशन लेयर्स lithium ion becomes bigger than aqueous cesium ion. Got it? That is hydration sphere. यस सर. यस. Everybody clear about it? So that is what Yes, we sir. have as hydration sphere. देखो मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत ढंग से बता रहा हूं. कोई भी डाउट है पूछ लेना. आपको अगर ऐसा लग रहा है यार ये क्या बता रहे हो, ये तो कोर्स में नहीं है, प्लीज रिमेंबर, केमिस्ट्री रट्टा नहीं मारना. तो ये याद कर लो. ठीक है, इसे रटने वाली कोई बात नहीं है. हाइड्रेशन स्फीयर लॉजिकल चीज है,
सिंपल सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। So that is what we call as hydration sphere, or hydration by definition is a process in which water molecule attaches without breaking. समझ में आ गई बात? ठीक है। Yes, sir. So when a species forms strong enough bonds with water, which could be hydrogen bond or ion dipole interaction or coordinate bond, water forms a layer surrounding the species. This surrounding layer is termed as hydration sphere. The hydration sphere could be single layered or multiple layered. बिल्कुल बता दिया मैंने आपको. In the formation of this sphere, energy is released. देखो बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड टूट नहीं रहे हैं. ठीक है, क्लियर? As the bonds are being formed. अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना हाइड्रेशन स्फीयर बनने में, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, और किसी भी सॉल्ट के डिसोल्यूशन में, किसी भी चीज के पानी में डिसॉल्व होने में हाइड्रेशन एनर्जी प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल, because this is the hydration energy which is going to break the interactive force between water molecule as well as the molecules of the species. जैसे कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी को ब्रेक करने का काम ये हाइड्रेशन एनर्जी करती है. ओके, more is the hydration energy of a species, more soluble it becomes. Is it clear? अन्य सरकार बस क्विज आ रही है, घबराओ मत. ठीक है, so that is what we have as the hydration energy. Clear? Hydration energy समझ में आ गया? तो Yes, attachment of sir. water molecules to a species either through formation of hydrogen bond or ion dipole interaction or the coordinate bond without breaking of water molecules is termed as hydration. तो hydration क्या होता है? मेरे ख्याल से मैंने बहुत टाइम लगा के बहुत ढंग से आपको बता दिया है. The single or multiple layer of water molecule formed around a species is termed as hydration sphere. ठीक है, the energy change when a species is hydrated is termed as hydration energy. Clear? Now, this energy compensates for the lattice energy of the solid and plays a major role in solubility of the substances. What a major role क्या? इसी की वजह से कोई substance dissolve होता है. Hydration of ions is completely dependent on their charge density. Hydration of ions. More is the charge density, more easily it is hydrated. The higher charge density on the ions will form a stronger and layer larger hydration sphere and release more hydration energy. A typical example is of lithium plus and cesium plus, जो मैंने आपको बताया है. Lithium plus के अंदर बहुत small ion है, बहुत high charge density है. Lithium plus is extremely large, huge multi-layer hydration sphere. ठीक है, it has 27 layers. Releases exceptionally high hydration energy amongst alkali metals. और यही reason है that lithium ion becomes extremely stable in the aqueous medium and lithium becomes the strongest reducing agent. जो उसका E naught की most negative value है ना, reduction potential की most negative value lithium ion की है, वो इस hydration energy की वजह से है. ठीक है, और यही रीजन है कि लिथियम आयन की कंडक्टिविटी सबसे कम हो जाती है. आयनिक कंडक्टेंस लिथियम आयन की सबसे कम है amongst alkali metals. Fine. Cesium is as such the largest ion, but its hydration sphere the smallest. The effective size in the aqueous medium is the smallest amongst alkali metal. और इसलिए cesium ion travels the fastest in the conduction. उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है. ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की. हाइड्रोलिसिस आमतौर से हम डिफाइन करते हैं, इट इज ब्रेकिंग ऑफ अ स्पीशी बाय वाटर. यही बोलते हैं ना, वी से हाइड्रोलिसिस इज ब्रेकिंग ऑफ अ स्पीशी बाय वाटर. एब्सोल्युटली रॉन्ग. It is breaking of water by a species. समझे? Hydrolysis is breaking
of water into H plus and OH minus by a species which consumes H plus or OH minus or both. ठीक है? That is what we call as hydrolysis. Hydrolysis is not breaking of the species. Hydrolysis is breaking of water. ठीक है? Let's talk about an example. हमारे पास है beryllium 2 plus. ठीक है? Beryllium 2 plus interacts with water and it forms beryllium hydroxide, which precipitates down and forms 2H plus. ठीक है? Now beryllium ने क्या किया? Beryllium 2 plus ने वाटर के साथ बॉन्ड बनाया, यहां से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा, जिसने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा एंड इट गिव्स अस, अब ये दूसरा OH से भी इंटरैक्ट करेगा, ये यहां से बॉन्ड इधर क्लीव हो गया, यहां से भी H प्लस निकल गया, तो हमें मिल गया बेरिलियम विद OH, OH with 2H plus. Now this is hydrolysis. ठीक है? अब हाइड्रोलिसिस हमारे पास कई तरीके के हैं. ठीक है? हमारे पास हाइड्रोलिसिस कई तरीके के हैं. ऑफ हाइड्रोलिसिस. ठीक है? पहला हमारे पास है कोवेलेंट हाइड्रोलिसिस. मतलब कि वी हैव द कोवेलेंट स्पीशी जो पानी के साथ इंटरेक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है, स्पीशी बन रही है. जैसे कि हमारे पास है BF3 plus 3H2O gives us BOH thrice plus 3HF. ये कोवेलेंट स्पीशी का हाइड्रोलिसिस है. PCl5 का हाइड्रोलिसिस हो गया, PCl3 का हाइड्रोलिसिस हो गया, SF4 का हाइड्रोलिसिस हो गया, NCl3 का हाइड्रोलिसिस हो गया. These are covalent hydrolysis जिसमें स्पीशी के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. हंसिका, चलो ठीक है, आप कान में हेडफोन लगा के सुन तो सकते हो, देख नहीं सकते तो कोई बात नहीं. ठीक है? ओके. सो ये है कोवेलेंट हाइड्रोलिसिस. देन वी हैव आयनिक हाइड्रोलिसिस. आयनिक हाइड्रोलिसिस में भी दो टाइप है, कैटायनिक, एनायनिक. कैटायनिक का एग्जांपल अभी हमने देखा है. एनायनिक का अंदर हमारे पास हो सकता है C2 माइनस. दिस इज कार्बाइड आयन. This interacts with water to give C2H2 plus twice of OH minus. ठीक है? This is what we have as cationic and anionic hydrolysis. ठीक है? अब cationic hydrolysis में एक इंपॉर्टेंट बात है. Cationic hydrolysis increases the concentration of H plus, whereas anionic hydrolysis increases the concentration of OH minus. हंशिका बेटा, ये लेक्चर्स इंडिपेंडेंट है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है? बस क्लास में लेट मत आया करो. लेट आते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. क्लास स्टार्टिंग से देख लो, ठीक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ.
So that is what we have as the carbide ion. ये anionic hydrolysis हो जाता है. So these are the types of hydrolysis we have. Everybody has copied it down? Yes, sir. Noted. Ayushi, कोई confusion? Ananya, कोई confusion? Okay, Ananya, you are on YouTube as well. Chalo. So hydrolysis is the reaction involving the breaking of a bond in water to form H plus and OH minus by a species. So a species hydrolyzes. Hydrolyzes means species breaks water. समझ आ रही है बात? अब देखो आप अब सोच के देखना जितने भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस डिफरेंस इज जस्ट अ सिंपल वन हाइड्रेशन में वाटर ब्रेक नहीं करता हाइड्रोलिसिस में वाटर ब्रेक करता है ठीक है इन दिस प्रोसेस द स्पीशी कंज्यूम्स H plus or OH minus or in some cases both ठीक है मोस्ट ऑफन द कोवेलेंट हाइड्रोलिसिस दोनों कंज्यूम हो जाते हैं ओके An electron deficient species will consume hydroxide, that is OH minus from water. Electron deficient species, Lewis acid, positive charge. Okay? It is going to consume hydroxide, that is OH minus, and increase the concentration of H plus in the solution, making it acidic. Okay? While an electron rich species, जिसे हम बोल सकते हैं nucleophile Lewis base, ठीक है? Anion. While an electron-rich species will consume hydronium ion, that is H plus from water, increasing the concentration of OH minus in the solution, making it basic. So anionic hydrolysis is going to make the solution basic. Cationic hydrolysis is going to make the solution acidic. If a certain ion has a high charge density that is comparable to H plus or OH minus in water, then it may consume the opposite ion from water to reduce its charge density. It would lead to hydrolysis by the ion. ये ionic hydrolysis हो जाएगी. If a cation has a high charge density, it will cause cationic hydrolysis. The hydrolysis by the cation would consume the hydroxide ion, increase the concentration of H plus, and cationic hydrolysis makes the solution acidic. ये बात समझ में आ रही है? कोई ज्यादा जल्दी तो नहीं चल रहा? ठीक है? If an ion has a high charge density, it will lead to anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis would increase the concentration of hydroxide ion, and it is going to make the solution basic. ठीक है? Hydration is surrounding of the species by water molecules forming a single or multiple layer through hydrogen bonding or ion dipole interaction or coordinate bonding is termed hydration. Hydrolysis is the reaction involving breaking of bond in water to form H plus and OH minus by a species. In this process, the species consumes H plus or OH minus or both. तो hydration और hydrolysis का difference clear हो गया? चलिए. Yes, Yes, sir. sir. Okay. अब salt क्या होता है? Salt is a compound formed along with water. ठीक है? A salt is simply, अगर मैं बोलूं, salt is a strong electrolyte. Salt is a strong electrolyte. कई cases में तो हम HCl को भी salt बोल सकते हैं because it dissociates in water. But strong electrolyte having cation and anion in solid state. That's a salt. Okay. A compound formed along with water in the reaction of an acid with a base is termed as salt. तो salt की हमारे पास कई definition, उनमें से एक definition ये भी है.
It's either obtained after the evaporation of the solvent, that is water, or simply precipitates out if it is insoluble. तो ये salt बन जाता है. It's an ionic compound and is a strong electrolyte. ये सारी की सारी चीजें बस सुन ली, काफी है. ये डायरेक्टली कोई नहीं पूछता. ठीक है. हमारे पास दो तरह के एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स. इसी तरीके से हमारे पास दो तरह के बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. और क्योंकि हमारे पास दो तरह के एसिड और दो तरह के बेसिस हैं, तो हमारे पास चार तरह के सॉल्ट्स हैं. सो वी हैव फोर काइंड ऑफ. ठीक है. व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन, and that is a salt formed by the reaction of strong acid with a strong base such as NaCl. ठीक है. अच्छा, पता है एक चीज में कंफ्यूजन होती है, a salt having a strong acid and a strong base, गड़बड़ हो जाती है. ठीक है. Na plus is a weak acid, Cl minus is a weak base. ठीक है. Then we have another one, a salt formed by the reaction of strong acid with a weak base. ठीक है. ये अमोनियम क्लोराइड है. वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. Then we have a salt formed by the reaction of strong base with a weak acid, sodium acetate. ठीक है. And then we have the salt formed by the reaction of weak base with a weak acid, and that's ammonium acetate. Clear? अब ध्यान रखो, we are going to talk about salt hydrolysis. So when we discuss the salt hydrolysis, must be clearly understood that we are talking about. सर ये टॉपिक इजी है. तो अच्छी बात है बेटा, इजी लग रहा है ना आपको नन्या? आपको इजी लग रहा है या आपको पहले से इजी लगता है? क्या चाहते हो, नहीं करवाऊं? इजी लग रहा है. चलो ठीक है, नहीं करवा सर, तो दूं. करवाइए सर. ओके, ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना, बस बात खत्म. तो अगर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, लोग ये चीजें छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं, तो सोचते हैं आपको पता ही होगी. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट 0.1 मोलर सॉल्यूशन. सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट्स विच आर सॉल्युबल. हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं इस समय. तो 0.1 मोलर की बात कर रहे हैं. सो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर इज नेग्लेक्टेड. तो हम वाटर के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे. A salt capable of forming 0.1 molar solution is considered soluble. 0.01 से 0.1 को हम slightly soluble बोलते हैं या हम बोलते हैं partially soluble. ठीक है. और 0.01 से अगर कम कंसेंट्रेशन ही बन पाता है तो उसको स्पेरिंगली soluble बोल देते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में इनसॉल्युबल बोल देते हैं. वैसे इनसॉल्युबल जैसी कोई चीज होती नहीं है, बट वी से इट इनसॉल्युबल. ठीक है. चलिए हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात करते हैं. अब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है NaCl सॉलिड. ये पानी के साथ इंटरेक्ट करके सोडियम आयन और Cl माइनस आयन कर देता है. नाउ दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन.
And this is what we can call as dissociation. Separation of Na plus and Cl minus is dissociation. Okay? The hydration energy due to ion dipole interaction is able to compensate for the lattice energy and the energy required to break the hydrogen bonds in water. तो ion dipole interaction के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है? और इसमें थोड़ी सी एंट्रोपी इंक्रीज भी होती है. जब नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, टेम्परेचर हल्का सा डिक्रीज होता है. ध्यान देना, टेम्परेचर हल्का सा डिक्रीज होता है. इट इज ओवरऑल एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो हाइड्रेशन एनर्जी इज नॉट एबल टू कंप्लीटली कंपनसेट फॉर द लैटिस एनर्जी. थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम होता है एंड दैट इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी. तो ओवरऑल डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव. ठीक है? तो स्लाइटली Yes, sir. एंडोथर्मिक बट टेक्स प्लेस. फाइन. तो आपके जो भी कहीं कहीं डाउट आते हैं ना, वो सारे के सारे साथ साथ क्लियर करता चला जा रहा हूं. तो दिस प्रोसेस इज व्हाट वी हैव एज हाइड्रेशन. ये हाइड्रोलिसिस नहीं है. ठीक है? अब सोडियम एंड क्लोराइड आयन गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म्स द हाइड्रेशन स्फीयर. अब Na प्लस एक लार्ज कैटायन है. इट हैज लो चार्ज डेंसिटी कंपेयर टू H प्लस. तो ये वाटर में से OH माइनस खींच नहीं सकता. तो Na प्लस हाइड्रोलिसिस नहीं करता. ठीक है? Although it gets sufficiently hydrated to be soluble in water, it has no tendency to pull hydroxide from water and show hydrolysis. ठीक है? तो सोडियम आयन हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता. यही हाल क्लोराइड आयन का है. भाई सोडियम आयन इज अ वीक एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, एंड क्लोराइड इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस. क्यों है वो वीक कॉन्जुगेट बेस? बिकॉज ऑफ इट्स लो चार्ज डेंसिटी. ठीक है? सो Cl माइनस भी H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करता और ये भी हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता. ठीक है? सो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता. तो व्हाट वी कैन से, this salt, the cation and anion, both have low charge density and stable in solution. So the salt formed by the reaction of a strong acid and a strong base does not hydrolyze. And the solution is neutral. ये बात समझ में आ गई? नहीं नहीं बेटा, अनन्या सरकार, AgCl तो soluble ही नहीं है. तो AgCl का एग्जांपल कैसे लोगे? We are talking about soluble salts at this moment. Okay, sir. Clear? ठीक है? So the solution is neutral. Clear? अब अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं. अब अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो ये भी पानी में अच्छा खासा डिसॉल्व होता है, क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर. ये बनाता है NH4Cl gives aqueous NH4 plus and Cl minus. ठीक है? फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन. नाउ chloride is a conjugate of a strong acid, that's hydrochloric acid. So chloride is stable and does not show hydrolysis. ठीक है? When we talk about ammonium ion, it's a conjugate of ammonium hydroxide, which is a weak base. Ammonium ion is surrounded by water molecules and इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छा डोनर नाइट्रोजन है. ठीक है? तो अमोनिया होल्ड करता है H प्लस, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ H प्लस वाटर के पास चला जाता है. ठीक है? अब इसमें क्या हुआ? हमारे पास है NH4 प्लस. नाउ दिस इंटरैक्ट्स विद वाटर. नाउ व्हाट वी फाइंड इज कि H प्लस कुछ यहां से निकल कर वाटर में चला जाता है और हमें मिल जाता है NH3 aqueous plus H3O plus. ठीक है? Now
You can even say that NH4 plus has broken apart to give H plus. Now this is hydrolysis. Increases concentration of H plus. Solution becomes acidic. This is cationic hydrolysis. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Yes, sir. Okay. So ammonium ion is not much stable and hydrolyzes. This is the cationic hydrolysis without any problem. तो ये हमारे पास आ गया cationic hydrolysis. ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि NH4 प्लस ने OH माइनस एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, अब यहां पर H2O इज सॉल्वेंट. तो यहां पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यूज कर सकते हैं, या फिर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. अब जरा इसको कर लेते हैं यार, बहुत हो गया. थोड़ा सा लिख के करें और थोड़ा सा स्लाइड से करें. तो हमारे पास है NH4 प्लस प्लस H2O is in equilibrium with NH4OH plus O plus H plus. ठीक है, यहां से 1 माइनस H निकाल देते हैं. नाउ व्हाट इज H? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. ठीक है, वाटर में से H निकालने का कोई मतलब नहीं है, वाटर इज द सॉल्वेंट. तो यहां पर ये H बन जाएगा, यहां पर ये H बन जाएगा. मल्टीप्लाइंग इट बाय कंसंट्रेशन, देख रहे हो, द सेम इक्वेशन वी आर यूजिंग, बस अल्फा की जगह H लगा दिया है. हर चीज एग्जैक्टली सेम है. तुम यहां पे भी अल्फा यूज कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो C इंटू 1 माइनस H आ गया, यहां पर ये CH आ गया, यहां पर ये CH आ गया. अब हम बड़े आराम से KH भी निकाल सकते हैं. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. अनन्या, अगर आप कॉपी भी करना है तो क्या करोगे? हो जाएगा कॉपी, लेकिन कॉपी करके फायदा नहीं है ना, बहुत सारे नोट्स हैं. ठीक है, मिल जाएंगे PDF. डोंट वरी, इस बार अभी मैं आज की क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा. ठीक है, नाउ KH would be equal to the concentration of product, that is NH4OH, into the concentration of H plus divided by the concentration of NH4 plus. NH4 plus क्या है? Concentration of the salt. ठीक है, सो ये हमारे पास KH की वैल्यू आ गई. कोई कंफ्यूजन? अब एक बड़ी मजेदार सी बात देखो, हम एक नया वैल्यू क्यों डिफाइन कर रहे हैं? ठीक है, यहां पर अगर हम नए वैल्यू की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी, एक इक्वेशन है हमारे पास, H2O is in equilibrium with H plus plus OH minus. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KW. ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है NH4OH is in equilibrium with NH4 plus plus OH minus. इसकी वैल्यू KB है. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, if I subtract the second equation from the first equation, I get OH minus cancel हो जाएगा, and I will get NH4 plus plus H2O in equilibrium with NH4OH plus H plus. कोई दिक्कत यहां पर?
No, sir. No, sir. Now this is nothing but KH. जब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिवाइड हो जाते हैं. So what we find is KH is equal to KW by KB. ठीक है. अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी बात बताऊं. अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इफ आई कंसिडर NH4 प्लस एज द एसिड, तो क्या ये एसिड का डिसोसिएशन नहीं है? नाउ दिस KH is actually equal to Ka of NH4 plus. KH is equal to Ka of NH4 plus, which is equal to Kw by Kb of NH4OH. ठीक है. Sir, NH4 is a strong acid. NH4 plus, NH4 plus. no, it's a weak acid. Not a very strong one. Sir, KW by KA कब होगा? Kw by Ka is going to be equal to Kb of NH4OH. ठीक है. Fine. So that is what we get. Yes, sir. यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? No, sir. Now here again, जैसे कि हम करते आए हैं, हमारे पास इक्वेशन इज NH4 plus plus H2O in equilibrium with NH4OH plus H plus. ठीक है. Now we have KH, which is equal to KW upon KB. ठीक है. Now that's equal to, यहाँ पे C into 1 minus H है, ये CH है, ये CH है. That is equal to CH into CH divided by C into 1 minus H is equal to CH square. 1 minus H का H फिर से हमने neglect कर दिया है. ठीक है. Now what is H? H will be equal to under root of KH by C, which will be equal to under root of KW upon KB multiplied by C. ठीक है. Now concentration of H plus is equal to CH. That will be equal to under root of KH by C multiplied by C square is equal to under root of KH multiplied by C. ठीक है. And that's equal to under root of KWC upon KB. यहां तक किसी को दिक्कत? No, sir. Same process है. अब सब कुछ सेम ही चल रहा है, बस यहां पर हमने KH की जगह हमने KW by KB लिख दिया है. Why should we Yes, define sir. another equilibrium constant when we can use the previous equilibrium constants? ठीक है. चलिए, let's take the log of the equation. Log of the concentration of H plus is equal to 1 by 2 bracket log of KW plus log of C minus log of KB.
पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, so we get minus log concentration of H plus is equal to 1 by 2 bracket minus log Kw plus minus log C minus log Kb. हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. It's clear. It's minus log of concentration of H plus is equal to 1 by 2 bracket minus log Kw plus minus log C minus log Kb. चलिए P लगा दें अब. Yes, pH sir. is equal to 1 by 2 bracket pKw minus log C. ठीक है, माइनस लॉग माइनस पी के पी. Any confusions, anybody? No, sir. No, sir. Now this is the formula for pH of a salt of strong acid with weak. ये पूरा डेरिवेशन है हमारे पास. ठीक है, सर नीट के लिए सिर्फ फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है ना? नीट के लिए फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है. इज दिस क्लियर? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, आंसर दो. सिंपल क्वेश्चन आंसर, जल्दी से आंसर दो इसका. अक्षय ठाकुर, अगर ऐसे ऐसे कहते रहोगे तो सारी चीजें सेम ही हो जाएंगी, कोई भी डिफरेंस ही नहीं रहेगा. अनन्या, आपने कैलकुलेशन की ट्रिक्स भेजी हैं पीएच के, प्लीज ये ट्रिक्स यूज मत करना. मैं एक बार इसको देख लूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर द ट्रिक्स. वो ट्रिक्स ना गलती करवा देती हैं. ठीक है, आंसर दो इसका.
सर 10⁻⁻5 दिया हुआ है। हाँ जी, Kb की वैल्यू। अनन्या, यू डोंट नीड दिस ट्रिक्स, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना, गलती कर जाओगे। ओके, चलो आगे कर, इसको बताओ, आंसर बताओ। हाँ आयुष्मान मधुकर, GOF एकेडमी याद है मुझे, अभी चल रही है ना? -3/2. -3/2 कहां से आ गया बेटा? PKW is not 7, PKW is 14. Okay, sir, clear. ठीक है, सर -1 कैसे आया? बेटा 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है ना, log 0.1 is equal to -1. ओके सर। चलिए अब सोडियम एसिटेट की बात करें। अब अगर हम सोडियम एसिटेट की बात करते हैं तो दिस डिसोशिएट्स, नाउ हियर इट इज अ कंप्लीट एरो, यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ओके? Here we are going to get CH3COO minus along with Na plus. Now Na plus is stable, so the cation is not going to show hydrolysis. But anion, when we talk about CH3COO minus, it is capacity to interact with H2O and form an equilibrium, giving us CH3COOH along with OH minus. Again the same thing, 1 minus H, 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 C into 1 minus H, CH and CH. And here again we are going to get KH, which is equal to KB of CH3COO minus. Okay. And that would be equal to the concentration of CH3COOH into concentration of OH minus divided by the concentration of CH3COO minus.
And here, when we talk about the equation, we have one equation as H2O in equilibrium with H plus OH minus, which has the value of Kw. Other one is CH3COOH in equilibrium with H plus CH3COO minus, which is Ka. Again, second equation को first में से subtract करना है. And we are going to get this equation. So KH is actually equal to KW upon KA. Okay. And this is equal to CH square. So what we get? H is equal to under root of KH by C is equal to under root of KW upon KAC. Concentration of OH minus here will be equal to CH, which is equal to under root of KW upon KAC multiplied by C square is equal to under root of KWC upon KA. ठीक है? लॉग ले लें. 1 by 2 bracket log KW plus log C minus log KA. ठीक है? नेगेटिव लॉग ले लें. 1 by 2. एक शॉर्टकट मार दूं क्या बीच में? एक स्टेप गायब कर दूं? No, sir. नहीं. Yes, please, चलो, sir. ओके, ठीक है, पूरा स्टेप लिख देते हैं. माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस माइनस लॉग सी माइनस माइनस लॉग के ए. ठीक है, अब P लगा देते हैं. वी गेट पी ओ एच इज इक्वल टू 1 बाय 2 ब्रैकेट. Here it becomes PKW. Here it becomes minus log C. Here it becomes minus Plus. PKA. Minus PK. बेटा माइनस ये पूरा का पूरा P बन गया ना, तो माइनस as it is रह गया. ठीक है? Now this is POH. Now what is pH? pH is equal to PKW minus POH. So pH is equal to PKW minus 1 by 2 PKW minus log C minus PKA. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ. दिस बिकम्स इक्वल टू 1 by 2 PKW minus PKW plus log C plus PKA. So that's equal to 1 by 2 bracket PKW plus log C plus PKA. Now this is the pH of a salt of a strong base plus weak acid. Any confusions, anybody? No, sir. No, sir. Pura derivation clear? देखो बेटा, I will sincerely ask you not to use tricks.
आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं. दे आर नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट क्वेश्चन. लेकिन ट्रिक्स के चक्कर में अगर कहीं पर भी छोटा सा भी इधर उधर हुआ तो गलती हो जाएगी. फाइन. आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, इसलिए ट्रिक्स मत लगाओ. आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी जो गलतियां होती हैं वो सिली मिस्टेक्स हैं, और ट्रिक्स में सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं क्योंकि ट्रिक्स के अंदर बहुत कुछ याद रखना पड़ता है. ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव अ सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन. कोई दिक्कत? यहां पे हमारे पास एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, इसलिए ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत? So it becomes Kw by Ka, Kw. pH की वैल्यू हमारे पास आ गई है. फॉर्मूला याद रख लिया? Yes, sir. Noted. नोटेड. Noted, sir. तो क्वेश्चन करो. क्वेश्चन नहीं किया हमने. चलो एक काम करो, क्वेश्चन में ऐसे लिख देता हूं. कैलकुलेट द pH of 0.01 molar CH3COONA at 298 Kelvin. ठीक है. Ka is equal to 10 raised to power minus 5. चलिए आंसर दे दीजिए. सिंपल क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर दो. Sir, हाँ बोलो. 17/2. 8.5. Yes, sir. ठीक है. एवरीबॉडी गॉट द आंसर? डन. ना अब जरा अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन की बात करें. अच्छा एक बात नोटिस करना, एक बात ध्यान से सुनना. Whenever we talk about any example of a weak acid with a weak base, we always get the example of ammonium acetate. Whatever be the level of the book you find, there will always be ammonium acetate. Do you know why it is ammonium acetate? Ammonium acetate is a typical example in which Ka of CH3COOH is equal to Kb of NH4OH. And so the cationic hydrolysis and anionic hydrolysis are equal to each other. That is why we always get this example only. समझ में आ गई बात? तो हमने सबसे पहले तो वही किया जो हमने हाइड्रेशन करना था, हाइड्रेशन कर दिया. अब यहां पे कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों होंगे.
और दोनों बराबर होंगे। ये एक टिपिकल केस है, इसलिए दोनों केस में ये H सेम है, वरना ये दोनों सेम नहीं होते। अब यहां पे हाइड्रोलिसिस नॉट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, H इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच। यहां पे अगर आप लेके चलोगे तो दिस इज इक्वल टू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द पीएच, और ये इक्वेशन एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी ने दे रखा है 7 प्लस 1/2 पीके माइनस पीके बी। चलिए सॉल्व कीजिए, नोटिस सर। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर 9। इजी नाइन क्वेश्चन। पॉइंट टू हम्म, 9.2। 9.2 कैसा है बेटा? सर इजी। 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। यहां पे आप डब्ल्यू ए बी ले सकते हो ना, एसिड एट बेस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 14 प्लस पी के ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9। सबसे पहली बात तो एसिड की बात हमारे पास है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ये 9 आ गया। 9। 9 और ठीक है, पीकेपी 10 to the -5 मतलब 5 आ माइनस जाएगा। ये 5। भी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 18/2 इज 9.2 कैसे आ गया बेटा? सर -5 को 5 ही लिखेंगे। -5 पी है ना, पी के बी इज 5। यस सर। हाँ, तो पी के बी 5 आ गया यहाँ पे। 9 आ रहा है। तो 9 आएगा ना। इज इट क्लियर?
ये सारी की सारी चीजें Yes, हम sir. कर चुके Yes, हैं. sir. The tendency of the reaction is 1 by inverse of Kw. ये Kw upon Kb. ठीक है, ये हमारे पास टेंडेंसी टू रिएक्ट आ जाएगा. यहां तक किसी ने कुछ भी पूछना है? No, sir. सर लास्ट वाला फॉर्मूला में लॉग का कोई यूज नहीं है. नहीं. And then as you can very well see that we have been using the log, but we didn't need log. Okay. Yes, sir. Many a times we make our studies difficult by trying to make it easy. ठीक है. Just get the 2 minutes break. पानी वानी पी लो and we'll continue. आज तो और कोई क्लास नहीं है ना? So we can continue with the session. Yes, sir. Okay. Yes, sir. शुरू खत्म ही कर देते हैं एक ही बार में. ठीक है. ओके देन. अभी 2 मिनट.
What would be the next chapter? Redox. हेलो सर। हम्म सर कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो अच्छा हो। मेरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। रिडॉक्स चाहिए होगा, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह निकालनी पड़ेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ना। जब तक हम फिजिकल खत्म नहीं कर देते ना, तब तक हम और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक शुरू कर नहीं सकते। और फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी चाहिए होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ओके, चलिए सर, शुरू करें अपना काम। यस सर। Okay, we are going to talk about the solubility product now, and that would be the last topic of the chapter called Ionic Equilibrium. इस Ionic Equilibrium में कितना लंबा चैप्टर है। Okay, now to talk about the solute and solvent, आई बिलीव हमने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आराम से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात की थी। व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉल्यूट एंड व्हाट एग्जैक्टली आर सॉल्वेंट। ठीक Yes, है, sir. सो एनी कंफ्यूजन देयर? यस सर। No, ओके, sir. अब हमारे पास अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which no more solute can be dissolved, keeping the temperature and pressure constant. कल आपकी कोई और क्लास तो नहीं है ना? No, sir. ठीक है, तो कल हम आराम से नो क्लास सर। रख सकते हैं, आज शाम को भी हम क्लास रख सकते हैं। Saturated solution is a solution in which no more solute can be dissolved, keeping the temperature and pressure constant. That is what we have as saturated solution. ठीक है. Concentrated solution is a solution in which the mass of the solute is more than the mass of the solvent. ठीक है. That is what we call as the concentrated solution. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सैचुरेटेड और कंसंट्रेटेड दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, डोंट मिक्स देम अप। वी कैन हैव अ सैचुरेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड वी कैन हैव कंसंट्रेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर? सो प्लीज डोंट मिक्स देम अप। ऐसे कई चीजें हैं जिनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बन जाता है, कंसंट्रेटेड नहीं बनता, और ऐसी भी चीजें हैं जिनका कंसंट्रेटेड बन जाता है पर सैचुरेटेड नहीं बनता। इज दैट क्लियर? यस सर। सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकती है। ठीक है, सैचुरेटेड और कंसंट्रेटेड कंफ्यूज मत करना। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं AgCl की बात करूं,
AgCl 1.9 milligram per liter is saturated. But would you be able to call it concentrated? 95% ethanol quite obviously is concentrated, but you can still add more ethanol into it. It is not saturated. Okay? तो इसलिए प्लीज कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड में गड़बड़ मत करना. और देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड आल्सो. सुपर सैचुरेटेड के अंदर होता यह है कि यू हैव एडेड मोर सॉल्यूट देन इज पॉसिबल. तो वो हल्का सा डिस्टर्बेंस होती है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. हाँ, 3 बजे क्लास है ना बेटा, 4 बजे तो नहीं है ना. हमारी क्लास तो 4 बजे होती है. ठीक है. और आज 4 बजे वी आर डूइंग एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. 4 p.m. NCERT reading of ionic equilibrium. Prepared. Be prepared for that. Okay, sir. Okay. So we talk about dissolution of AgCl. AgCl aqueous, AgCl aqueous बन जाता है. Now it is a salt. तो जितना AgCl dissolve हुआ है ना, वो completely dissociate हो जाता है. AgCl is sparingly soluble. सो दैट इज वाई यहां पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम बन गया है. जितना हमने AgCl डाला है वो पूरा डिसॉल्व नहीं होगा. तो इट्स नॉट वन साइडेड इक्विलिब्रियम, वन साइडेड रिएक्शन. तो AgCl aqueous is going to dissociate to give Ag plus aqueous and Cl minus aqueous. अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो फाइनल इक्वेशन हमें ये मिल जाती है. अब अक्सर हम इस aqueous को भूल जाते हैं. अब हम बात करते हैं एक चीज की जिसे हम कहते हैं solubility. Solubility is the concentration of the substance dissolved in its saturated solution at a constant temperature. And that constant temperature is usually 298 Kelvin and a constant pressure which is usually 1 bar. And this is given in molarity, most often molarity. Okay. So this is what we have as the equation. अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहां पर ये सॉलिड है. ठीक है. Let us say its solubility is S. S is the solubility. Now, if S is the solubility, Ag plus also will be formed as S and Cl minus also will be formed as S. ठीक है. अगर हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें K की, तो K will be equal to the concentration of Ag plus into concentration of Cl minus divided by the concentration of AgCl. But the problem is AgCl is solid, which we don't consider. So this is going to simply become equal to the concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. Now this is the product of the solubilities. So this is called KSP, the solubility product. Is that clear? Yes, sir. So this is solubility product. Solubility product is the product of the Yes, sir. concentration of ions. Product of the concentration of ions raised to power their stoichiometric coefficient present in a saturated solution of the salt. ठीक है. तो KSP is product of concentration of ions to the power stoichiometric coefficients in a saturated solution of the. ठीक है. ये saturated solution is the KSP. No confusions? So this is what we have as the KSP of Ag plus and Cl minus, that is silver chloride. ठीक है. अब यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें
तो KSP is equal to Ag plus Cl minus S into S square. This is the solubility product. The relation of the solubility with the solubility product would turn out to be solubility is equal to under root of KSP for AgCl. AgCl की जगह आप सीधा सीधा लिख सकते हैं AB type of salt. मतलब एक cation एक anion है, तो that's going to be it. कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें, कैल्शियम फ्लोराइड का KSP का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, is going to be the concentration equation of calcium 2 ion multiplied by F minus, अंदर 2F मत लिख देना गलती से भी. It is the concentration of fluoride, not the concentration of twice of fluoride. ठीक है, raised to power 2. अब यहां पर अगर ये S जा रहा है तो इसका S बनेगा, इसका 2S बन जाएगा. So here it will turn out to be S multiplied by 2S raised to power 2. So this is going to be equal to 4S cube. तो अगर S की बात करोगे तो that will be equal to the third root of KSP by 4. Okay, so this is what we have as the calcium fluoride. हाँ भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट जरा एक्सप्रेशन लिख दो. सर हाँ जी, KSP is 108 is to the power 5. okay. Everybody is getting it. Yes, sir. So if we talk about S, that will be equal to fifth root of KSP upon 108.
Okay, you can even write 108 approximately 100. Okay, sir. Got it, sir. Okay, because this kind of a question is there in exemplar. So if we have a general equation ax by, can you give me this, its solubility product? Answer. Sir, KSP is x is to the power x and into y is to the power y. Mhm. Any confusions, anybody? No, sir. So S is equal to under No, sir. x plus y KSP divided by x raised to power x, y raised to power y. This is going to be a general equation for the solubility from solubility product. Solubility product is this definition. Read through the definition. आइए हम कर चुके हैं. It's again an experimentally determined quantity and depends on temperature. अब हम बात करते हैं ionic product की. ठीक है. Let's have a mixture containing sodium fluoride and calcium chloride. ठीक है. Let us say sodium fluoride has X molar concentration. Calcium chloride has a Y molar concentration. Okay. So what's the concentration of Na plus? That's going to be X. What is the concentration of F minus? That is going to be X.
What is the concentration of Ca2 plus? That is going to be Y. What is the concentration of Cl minus? That is going to be 2Y. किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब No, sir. No, sir. अब अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl की अगर बात करें तो दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस into the concentration of Cl minus. That would be equal to the concentration of Na plus into concentration of Cl minus. That is going to be equal to X into 2Y. ठीक है. अगर मैं बात करूं CaF2 की, तो this is going to be concentration of Ca2 plus into concentration of F minus raised to power 2. And that's going to be Y into X square. So that is going to be written as X square Y. अगर मैं NaF की बात करूं, तो that is going to be X square. अगर मैं CaCl2 की बात करूं, तो that will be 4Y cube. किसी को कोई प्रॉब्लम? Now all these calculations that I have done, these are called ionic products. The product of the concentration of ions present in a solution raised to power their respective stoichiometric coefficient corresponding to a particular salt is termed ionic product. ठीक है? So this is what we have as ionic product. Clear? Yes, sir. Yes, sir. QSP भी सेम ही होता है जैसे KSP होता है. अब QSP may be greater, less or equal to KSP. Now this is the Q of the reaction quotient. This is again the reaction quotient. The ionic product is reaction quotient. ठीक है? अगर दोनों बराबर हैं, saturated solution. If it is less than, it is unsaturated solution, more can be dissolved. If it is greater than, oversaturated solution, and precipitation takes place. Is it clear? Any kind of confusion? सर वो वाला पेज दिखाएंगे सैचुरेटेड मतलब KSP इक्वल्स टू QSP. हाँ ये वाला. देखो. सर लास्ट वाला में प्रेसिपिटेशन होगा. हाँ, लास्ट वाले में प्रेसिपिटेशन होगा. ओके सर, नोटिस सर. यस सर. Okay? So that's what we have as ionic product. चलो एक क्वेश्चन लिखें and then we'll end the question session. Okay? 50 milliliter, 0.1 molar CaCl2 is mixed with 50 milliliter, 10 raised to power minus 4 molar
NaF, ठीक है। KSP of CaF2 is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 10, ठीक है। Will PPT be formed? बस इतना सा क्वेश्चन, बस मुझे ये बता दो प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। बोलो प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। आंसर। अक्षय आंसर दो भाई। No, sir. The precipitation will not be formed. What's the value of Q? If Q is greater than K,
the precipitate will be formed. If Q is less than K, it will not be formed. So you want to say that Q is less than K. What is the value of Q? सबसे पहली चीज, concentration of CaCl2 is equal to 0.1 into 50 divided by 50 plus 50. That is equal to actually 0.05. Volume has doubled. In the same manner, concentration of NaF is equal to 0. It is actually equal to 5 into 10 raised to power minus 5. So if I actually get the value CaF2, the ionic product will be equal to 0.05 multiplied by 5 into 10 raised to power minus 5 raised to power 2. So this is equal to 10 raised to power 5 into 10 raised to power minus 2 multiplied by 25 into 10 raised to power minus 10. So this is equal to 125 into 10 raised to power minus 12, which is 1.25 into 10 raised to power minus 10, which is less than 2.5 into 10 raised to power minus 10. So no precipitate formed. Is this clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. So today evening, 4 o'clock, we are going to go through the NCERT of ionic equilibrium. Clear? अपनी तरफ से पूरा क्वेश्चन कर Okay, sir. लीजिएगा और ये मैं अभी अपलोड कर रहा हूं. You will get this on the WhatsApp group and the Telegram group. Is that okay? Okay, sir. Okay then. Okay, sir. Bye bye. Thank you, Thank sir. you, sir.